Good afternoon, everybody. On behalf of the Endocrine Society of India, I extend a very warm welcome to our eminent panelists for today's session and all our audience. Today, we are going to have a very exciting session. So, as we know, obesity is possibly the largest pandemic that has ever affected humanity, and the causes and the complications of obesity, they start right from before our birth, right from the intrauterine life, and extend till the end of our life. So March is being observed as the obesity awareness month by the Endocrine Society of India, and we are having a lot of sessions on social media for our public awareness. And today we have with us four very eminent panelists. Today we will be discussing the complications of obesity. How does obesity kill? क्या ये सभी ऑर्गन्स को अफेक्टेड करते हैं बॉडी में, और करते भी है तो कैसे करते हैं, इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसको लेकर आई नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ऑडियंस क्वेश्चंस. देयर विल बी वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम आवर ऑडियंस बिकॉज ओबेसिटी और इट्स कॉम्प्लिकेशंस को लेके सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है. I am Dr. Sunetra Mondal, consultant endocrinologist at Health World Hospital, Durgapur. I'll be moderating the session today. And we have four eminent panelists. Dr. Arindam Roy, who is an assistant professor in the Department of Medicine at College of Medicine and Sagar Datta Hospital, Kolkata. Welcome. We have with us today Dr. Mridul Das, who is the director of Diabetes Clinic and Diagnostic Laboratory from Agartala, Tripura. Welcome, sir. We have with us my close friend and colleague, Dr. Neha Agrawal, who is a consultant endocrinologist at Health World Hospital, Durgapur. Welcome. And Dr. Sayan Ghosh, who is a consultant endocrinologist at Kothari Medical Center, Kolkata. Welcome, Dr. Sayan. Good afternoon. Warm welcome to all our panelists today. And to start of this session, I know there will be a lot of audience questions, but first I will ask a few questions to our expert panelists. So my first question is for Dr. Mridul Das. So, sir, can you please discuss the metabolic complications of obesity? हम लोग अभी बहुत टाइम सुनते हैं metabolic complications. तो ये है क्या? और ये सब एक साथ क्यों होते हैं? Why do all metabolic complications occur together in obese persons? Okay. Thank you, Dr. Sunetra, and all organizers to call me for today's discussion. And first of all, I'll answer your first question. That is the metabolic complications of obesity. Actually, you see, मैं हिंदी में बोलूँ तो शायद सबको थोड़ा समझ में आ जाएगा. अच्छा, obesity क्या ये अभी एक ग्लोबल पेंडेमिक हो गया है अभी. The rising prevalence of obesity is accompanied by an increasing number of patients with many serious complications. और ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंडर में आ जाते हैं. तो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी अगर बोले तो वो है मेनली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक and also the type 2 diabetes and its and past all the complications, and also fatty liver, then other gallbladder stones, and possibly some forms of cancer also. एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी ये हम लोग अवेयरनेस के जरिए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में इतने भी कुछ कंट्री है जहाँ फैटी होना बहुत जरूरी है. Like just for example, I'll tell some names of country like Nauru, then Mauritania in Africa, then Tonga, Jamaica. There people who are not obese, they are not beautiful in their society, in their उसके कम्युनिटी में वो फैटी होना जरूरी है, नहीं तो वो लड़की का शादी ही नहीं होगा, कोई लड़का उसको पसंद नहीं करेगा, ऐसा है. और बचपन से उस लड़कियों को ऊंट का दूध पिलाया जाता है फैटी होने के लिए. अगर हम लोग ये अवेयरनेस उस जगह पे जाके बोले तो शायद हम लोग को पिटाई करेगा. एनीवे, सो these are the complications of obesity, the metabolic complication.
And your second part is why those complications starts together. Actually, see, the root cause of all these complications are insulin resistance. The insulin वो क्या होता है, वो हमारा जो पेनक्रियास से निकलते हैं, वो हमारा शुगर का मेटाबॉलिज्म, और नॉट ओनली शुगर, ऑल द मेटाबॉलिक सिस्टम्स आर कंट्रोल्ड बाय दिस इंसुलिन. तो वो जब रेजिस्टेंट हो जाता है, तो एक साथ सारे के सारे कास्केड, इट इज जस्ट लाइक कास्केड, सब सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं. And the obesity is the predominant factor leading to insulin resistance, of course, although other factors also play a role, like genetic predisposition, bad food habit, and malnutrition, then sedentary lifestyle, etc. So when there is insulin resistance, all complications starts together as a cascade. Yes, sir. Thank you so much for explaining it in such an interesting fashion. So ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस का जो रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इसी वजह से ये सेम कॉज के लिए आप ओबेसिटी जितने भी ऑर्गन्स को अफेक्टेड करते हैं कुछ हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से ही है. So just as Dr. Mridul Das was talking about, we know the most common cause for death. Obesity जो kill करते हैं humans को, तो सबसे common cause है cardiac complications. So Dr. Arindam, Yes. can you please throw some light on the cardiac complications of obesity? Yeah, thank you, Sunetra, for your beautiful question, and thanks, ESI and the whole organizing team again. To discuss about this cardiovascular complications of obesity, मेरे को जो बोलना है सबसे important है कि the first thing that start rising is the blood pressure. So hypertension is a very important cause of as part of the complication. We can say as a complication, we can say a part of the metabolic syndrome, which also accompanies the other components of the metabolic syndrome. सो ब्लड प्रेशर तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है. सेकंड जो है वो दैट इज सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट एंड द कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट. तो कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट के बीच में आपको ये हार्ट अटैक आता है, and that is a very most of the times very sudden in onset, so we do not get any sufficient time to treat the patient in a proper way. At the same time, the cerebrovascular accident, तो जो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं हम लोग, तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक्स, ये सब बीमारी एक्चुअली क्या करते हैं कि पेशेंट को मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ज़्यादा कर देता है, तथा हैंडीकैप ज़्यादा कर देता है, तो वर्क एफिशिएंसी कम हो जाता है, इफेक्टिविटी कम हो जाता है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. So not only this can cause death, but at the same time can increase the morbidity mortality. At the same time, there is also increased chance of the heart failure in obese patients, particularly in the background of diabetes. So that is another very important cause of cardiovascular disease. And the very important silent thing is the obstructive sleep apnea. So obstructive sleep apnea is such a component that also have a very negative impact on the cardiovascular system, particularly on the resistant hypertension, heart failure, particularly the diastolic heart failure. So these are the very important issues that we have to take it in mind. So hypertension, stroke, heart attack, obstructive sleep apnea. So these all are the cardiovascular risk factors and can be the complication of obesity. Yes. Thank you so much, Dr. Arindam. So just as we learned कि obesity के साथ साथ, obesity के लिए या obesity के साथ साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये सारे मिलकर हार्ट के जो आर्टरीज है, हार्ट के ब्लड वेसल्स, ब्रेन के ब्लड वेसल्स को क्लॉट करके हार्ट अटैक, स्ट्रोक कर सकते हैं. हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से या फिर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से हार्ट फेलियर हो सकते हैं. और बाकी जैसे डॉक्टर अरिंदम ने कहा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया, वो भी ओबीस पेशेंट्स में ज्यादा होता है, वो सडन कार्डियक डेथ का भी कॉज बन सकता है वो बाकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ. So my let's come out a bit of the this metabolic and cardiac complications. So we know obesity also has some mechanical complications, जिसका पैथोजेनेसिस, जिसका जो बेसिक कॉज है वो थोड़ा डिफरेंट है ये मेटाबॉलिक और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के साथ. So may I ask Dr. Sayan, what are the mechanical complications of obesity? Thank you, Sunetra, and thank you the organizing teams. The main things in the obesity, that is the metabolic complications, but other than that ये metabolic complication छोड़ के और कुछ complication है जिसका कारण है direct increase in the mechanical workload on a different part of the body. Now there are several mechanical complications that you should aware of that. The first and most important thing that is in the musculoskeletal system, that is in the joint, that आप लोगों का ओजन, the weight जब बढ़ेगा
तब आपको तो एक्स्ट्रा वेट जो है उसका तो बॉडी कैरी करेगा थ्रू दिस जॉइंट ऑफ द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट. And if the hip and knee carry this extra workload, then this joint starts to degenerate. There is degeneration start हो जाएगा and ultimately उसका osteoarthritis बन सकता है ज़्यादा. So in obesity and in the overweight individual, if there is increase in the body weight, so there is a chance of increasing risk of the osteoarthritis in the obese and overweight patient. And even in the overweight patient, the chances of osteoarthritis अब double हो सकता है. And with further increase in the body weight, the chance और भी बढ़ जाता है in the obese patient. And likely in a 1 kg the 1 kg increase in the body weight can also increase the chances of osteoarthritis by 10%. And if we can reduce our body weight, हम लोग जब weight कम करता है तब ये chance थोड़ा कम हो जाता है. So osteoarthritis का कारण से हम लोग का lifestyle बदल जाता है. हम लोग normal mobilization नहीं कर सकता है. So day-to-day activity can be hampered with this osteoarthritis. So we must be careful about this thing. Second is already discussed by Dr. Odindam, that is the obstructive sleep apnea. Here also there is a chance of mechanical compression has play a role, in important role in these regards. That हम लोग का गले में जो फैट जम जाता है और द laryngeal wall में जो फैट जम जाता है, उससे कारण से क्या होता है, जब हम लोग सो जाता है तो उसका एक मैकेनिकल कंप्रेशन और देयर इज अ कोलैप्स ऑफ द एयरवे होता है. सो रात में जब नींद होता है तो नींद का बीच बीच में सांस रुक जाता है, नींद टूट जाता है. So there is a certain spells of the apnea in between the sleep. So there is a chances of this obstructive sleep apnea. This is an important concern in the person with overweight and obesity. But this is not only the apneic spell that is the important thing, but this obstructive sleep apnea से कारण से और भी ज़्यादा complication बढ़ जाता है, like hypertension, diabetes, heart diseases, etc. All other complication can be linked to this obstructive sleep apnea. Number 3, हम लोगों का जब वेट बढ़ जाता है, स्पेशली एट द फेज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम लोग का सेंट्रल एरिया में वेट ज्यादा बढ़ता है, हम लोग का एब्डोमेन में वेट फैट तो ज्यादा जमा होता है. तो इसके कारण से एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, एंड दैट कैन कॉज दिस रिफ्लक्स डिजीज, आवर एसिडिटी प्रॉब्लम और द रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी चांस थोड़ा बढ़ जाता है ड्यू टू द मैकेनिकल कंप्रेशंस ऑफ दिस एब्डोमिनल वॉल फैट. And last but not the least, due to the mechanical the complications in the genital area, in the inner thigh pad of fat and the scrotal pad of fat can also complicate or can also cause the mechanical compressions of the epididymis and can also impair the sperm production or the sperm transport. It can also causes some male type of the infertility in the cases of the obesity. So these are the mainly the mechanical complications in the obesity. Thank you. यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर सायन ने बहुत लूसिडली एक्सप्लेन किया कैसे मोटापे के वजह से जॉइंट्स पे स्लीप एपनिया हो सकता है, जॉइंट अफेक्शन हो सकता है, बाकी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है. नाउ डॉक्टर नेहा, मे आई आस्क यू, क्या क्या कैंसर ओबीस पीपल में मोर कॉमनली होता है नॉन ओबीस पेशेंट्स के कंपैरिजन में, नॉन ओबीस पीपल के कंपैरिजन में? Thank you, Dr. Sunetra, and the whole organizing team for giving us a platform to discuss this. Yes, obesity and overweight people are at increased risk of developing certain types of cancers. And आप लोग ये जान के आप surprised होंगे कि there are 13 types of cancers are associated with obesity. अगर हम सर से पाँव तक शुरू करते हैं तो ब्रेन में meningioma का रिस्क होता है, थायराइड ग्लैंड की कैंसर्स का रिस्क होता है. अगर हम अब जीआई सिस्टम में जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इसोफेजियल कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, देन लिवर, किडनी, पैंक्रियास, ये सभी कैंसर्स का इंक्रीज बढ़ जाता है. स्पेशली इन द विमेन्स देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर्स एंड ओवेरियन कैंसर्स. ये कुछ टाइप के कैंसर्स हैं जिनका इंक्रीज बहुत बढ़ जाता है. और ये एज ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय डॉक्टर मृदुल दास दैट ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से देयर इज कॉम्पनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया. दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. तो उसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर्स कुछ सीक्रेट्स होते हैं, और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये ट्यूमरोफैक्टिव होते हैं. दैट मीन्स इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर सेल्स.
ये एक मैकेनिज्म है. The other mechanism, especially in females, because of the increased body fat, there is increase in the hormone levels, that is the estrogen levels. Especially in the postmenopausal women, estrogen levels बढ़ जाने की वजह से postmenopause women are more increased risk of developing breast cancers, uterine and ovarian cancers. Other risk factors along with the obesity for this cancers are the tobacco use. So combinedly, because of the weight and tobacco, as well as because of the genetic predisposition and because of the certain genetic mutations, overall there is increased risk of developing cancers. थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। सो ओबेसिटी में काफ़ी सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर कि एंडोमेट्रियल, ओवेरियन कैंसर्स, लिवर कैंसर्स एंड मेनी। एंड एज वी जस्ट लर्न दैट अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन शरीर में ज़्यादा होना, इसके पीछे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस है। नाउ हम लोग इस डिस्कशन के दौरान और ऐसे भी बहुत सारे बार डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। पेशेंट्स भी आजकल बहुत पेशेंट्स भी आके पूछते हैं, डू आई हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम? So, Dr. Mridul, may I ask you that this term metabolic syndrome, which is so commonly used in the context of obesity, can you please explain it in very simple language to our patients? Metabolic syndrome कब बोलते हैं कि किसी को है? अच्छा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो एक्चुअली देयर इज अ क्लस्टर ऑफ सम रिस्क फैक्टर्स एंड दोज आर स्पेसिफिक फॉर cardiovascular diseases. Metabolic syndrome greatly raises the risk of developing diabetes, heart disease and stroke. और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे सिंड्रोम एक्स, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम एंड डिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अच्छा, एक बात बोल रहा हूँ मैं, जो अमेरिका का दो ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक कॉन्सेंसस स्टेटमेंट बनाया। तो वो कॉन्सेंसस स्टेटमेंट बताया गया जो 5 फैक्टर है, ये 5 फैक्टर में कोई भी 3 होना जरूरी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम बताने के लिए। जैसे नंबर 1, एब्डोमिनल ओबेसिटी, द मीन्स हैविंग ए वेट बेली सरकमफेरेंस, मतलब कमर का जो हम लोग टेलर के जो मेजरिंग टेप है उससे मापा जाए तो क्या लेडीज के लिए 35 इंचेस से ज्यादा होना, या पुरुष के लिए फॉर मैन इफ इट इज मोर और इक्वल टू 40 इंचेस, देन उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का मतलब एक काउंट हो गया, एब्डोमिनल ओबेसिटी। और दूसरा है नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर, 130/80 दैट इज द कट ऑफ वैल्यू, उससे ज्यादा होगा, सिस्टोलिक 130 से ज्यादा होगा या डायस्टोलिक 80 से ज्यादा होगा तो उसको भी काउंट में लिया जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है। और नंबर 3 जो है इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, दैट इज इम्पेयर्ड फास्टिंग। ऐसे तो 110 तक हम लोग जानते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बोलने के लिए वो 100 से ज्यादा होना ही काफी है, ठीक है। नंबर 4 जो है, नंबर 4 और नंबर 5 दोनों है डिसलिपिडेमिया का 2 फैक्टर। हम लोग जानते हैं जो ट्राइग्लिसराइड, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑयल ऑफ द ब्लड, जो हमारे खून पे कुछ ऑयल होता है जैसे कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, देन एचडीएल, एलडीएल वगैरह वगैरह। तो इसमें ट्राइग्लिसराइड अगर 150 और उससे ज्यादा हो जाए तो उसको भी काउंट में लिया जाएगा। और नंबर 5 जो है एचडीएल लेवल कम होना, मतलब एचडीएल इज ए गुड कोलेस्टेरॉल, एक अच्छा वाला तेल है हमारे खून में, जो कम होने से खतरा है, ज्यादा होने से अच्छा है। ये ज्यादा होने से खतरा वाला जो लिपिड है हमारे खून में वो कम हो जाता है, घटा हो जाता है, तो उसका परिमाप है 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे अगर कम हो जाए तो उसको भी काउंट में लिया जाएगा। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, देन इम्पेयर्ड fasting blood glucose, then high triglyceride and low HDL, इस 5 में अगर 3 किसी को होता है तो उसको हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसे देखा गया जो सारे वर्ल्ड में 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन रफली सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और बढ़ते एज के साथ, मतलब जब एज फॉर द एजेड पीपल, 40% पीपल between 60 and 70 they become metabolic, they are having metabolic syndrome, there's a thing, and this is actually metabolic syndrome का
ओबेसिटी जो है वो है कंपोनेंट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कंपोनेंट में एक है ओबेसिटी, ठीक है, जिसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं। थैंक यू। Yes, so very nicely summarized. So, obesity is one of the parts, one of the components of a cluster of risk factors, which we call as metabolic syndrome. So, हम लोग next question I will like to ask Dr. Arindam. So, we know obese जो भी है सबको एक लगता है कि हमको क्या polycystic ovary भी है. Obesity is very commonly linked to PCOS, polycystic ovarian syndrome. And so, can you please tell us a bit about how are these two related? और क्या सिर्फ ओबीस लेडीज को ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होते हैं? See, one thing that polycystic ovarian syndrome, is a diagnosis. There are some criteria है polycystic ovarian syndrome diagnosis करने के लिए, which we called as Rotterdam's criteria. तो ये क्राइटेरिया में आता है कि महिला लोगों को मेंस्ट्रुएशन डिलेड होता है, द फर्स्ट थिंग दैट इज टर्म्ड एज मेडिकली ओलिगोमेनोरिया or amenorrhea, and there can be clinical hirsutism or clinical androgenism, biochemical androgenism, that is body में androgen level है, तो पुरुष हार्मोन का जो लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंड्रोजन लेवल, that goes high. And number 3 is that as per USG अर्थात अल्ट्रासाउंड, आप लोग एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा तो उसमें ओवरी में सीज दिखाई देता है. सो देयर इज अ नंबर एंड काउंट एंड साइज ऑफ द होल थिंग. So these are the clinical, and investigational criteria for diagnosis of the polycystic ovarian syndrome. इसके बीच में कोई obesity नहीं आता है. But the problem is that in obese individual, this polycystic ovarian syndrome incidence is very, very high. Why so? Because in obesity, as we have already discussing, that insulin resistance is a very important thing, and that is very high in the obese individual, and that is one of the pathophysiologic reason behind this polycystic ovarian syndrome. So obese individual with the insulin resistance and hyperandrogenism are very prone to develop this polycystic ovarian syndrome. But truly speaking, all the polycystic ovarian syndrome patients are not obese. So there is a term called lean polycystic ovarian syndrome, where the obesity may not be present. The patient may have a normal BMI or the low BMI. So here the thing that the clinical androgenism, hyperandrogenism, that is predominant over that of insulin resistance. But the fact that even in these individuals, recent studies दिखाए कि insulin resistance is there, and that is not coming from the peripheral fat, that is coming from the visceral fat. So the fat that those are deposited over the liver, over the the heart, over the visceral organs, over the mesenteries. So these fats can give some insulin resistance, and we insulin resistance along with the hyperandrogenism can cause the PCOD. So obesity individuals definitely the महिलाओं से उन लोगों का PCOD होने का चांस बहुत ज़्यादा है. But even with the leaner individuals, we can have the PCOD in women population. Yes, thank you so much. And so we move on to the next question, which is for Dr. Shayan. तो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे थे कि ओबेसिटी मेल इनफर्टिलिटी भी कर सकते हैं, और दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर ऑडियंस कि ओबेसिटी रिलेटेड जो इनफर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशंस है फीमेल्स का तो जो है मेनली पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से है, तो अदर रीजंस भी है. तो हाउ डज ओबेसिटी कॉज मेल इनफर्टिलिटी, डॉक्टर शायन? Yes. Uh, Obviously, in the obese patient को maximum in the female obese patient को the chances of infertility थोड़ा ज़्यादा है, but ऐसे बात नहीं है कि मेल में कुछ infertility होता नहीं है, क्योंकि obese male को भी infertility होता है, though to some lesser extent than the female the patient with obesity. There are several reasons behind the male infertility in the obese patient. So आपको जो पता है क्या ओबेसिटी में ज़्यादा फैट जमा हुआ है तो अमाउंट ऑफ द फैट बढ़ जाता है, and it may be in the subcutaneous tissue or maybe within the visceral adipose tissue. And so ये फैट में क्या होता है, क्या जो फीमेल जो हार्मोन है एस्ट्रोजन और जो मेल हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन, सो ये टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन कन्वर्सन ज़्यादा होता है ये जो एडिपोस टिश्यू में. तो उसमें क्या होता है, तो मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मोर कन्वर्सन टू द फीमेल हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन. एंड अल्टीमेटली तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो एस्ट्रोजन क्या करता है, हम लोग का जो हार्मोन का जो मास्टर ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी,
सो पिट्यूटरी से सबको ग्लैंड सब ग्लैंड को कंट्रोल करता है. इन that is also the testis, that is the male gonadal, that is the male gonad. So ये क्या कहता है, तो एस्ट्रोजन ज्यादा हो जब जाता है तब ये पिट्यूटरी को फीडबैक इनहिबिट करता है एंड अल्टीमेटली ये पिट्यूटरी एंड जो गोनाडल जो एक्सिस है उसको डाउन कर देता है. सो टेस्टिस में क्या होता है, थोड़ा टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन में टू सम एक्सटेंट इंपेयर्ड हो जाता है in cases of the male obesity. So ultimately there is an endocrinopathy or the hormonal problem is always there in the patient with overweight and obesity. Other than that, there is also some seminal problem, that is semen parameters can be altered in the obesity and the overweight. We can see that in the obese patient the sperm count कम हो सकता है, sperm का motility कम हो सकता है, sperm का morphology भी abnormal हो सकता है, and there are some genetic changes also in the sperm that can also be observed in the form in the obese patient. Mainly जो कारण होता है, mainly that is I have already told that due to the increased pad of fat in the inner thigh and the total fat, so the temperature in the local area is got increased. So there are some thermal effect also. And for the sperm synthesis and sperm maturation, to some extent lower temperature is required than our normal body temperature. बट जब क्या होता है, इसमें फैट ज्यादा, लोकल फैट ज्यादा हो जाता है, तो इंक्रीज इन लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है. सो दैट कैन प्रिवेंट और दैट कैन इम्पैक्ट ऑन द स्पर्म फॉर्मेशन एंड द स्पर्म मैच्योरेशन. सो दैट कैन ऑल्सो that can cause the defective semen production, and there is an alteration in the semen parameters also. But I've already told another thing, that is the sleep apnea. And even in the sleep apnea, that is our जो हार्मोन का जो एक रिदम बनता है, क्या सुबह में ज्यादा सिक्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन का, थोड़ा इवनिंग आफ्टर द इवनिंग द कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है. तो इस स्लीप एप्निया के कारण से क्या होता है, क्या ये रिदम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू स्लीप एप्निया आल्सो दिस सेंट्रल एक्सिस फॉर दिस the pituitary to the testicular जो control जो है उसमें थोड़ा disruption हो सकता है, and that can also causes the infertility from the male side. And next, the last but not the least, that is the psychological factor. That is a very important thing in the obesity, the body disfigurement and to some extent depression due to the increase in the body weight. Ultimately it can causes the sexual जो desire बनता है उसको कम कर देता है, उसका confidence भी थोड़ा कम हो जाता है, and most of cases psychological cases erectile dysfunction, that the normal erection cannot be occurred in the form of the obesity due to the psychological factor. So the psychological things is always there in the background of obesity, and that can also impact the normal fertility of the male. Thank you. Yes, thank you so much. So there are so many factors. फीमेल्स में तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के वजह से, लेकिन मेल में भी ओबेसिटी रिलेटेड टेस्टोस्टेरोन कम होने के वजह से या फिर सीमेन क्वालिटी अल्टरेशन के वजह से ओबेसिटी इनफर्टिलिटी कर सकते हैं. और क्योंकि एक ऑडियंस क्वेश्चन हम लोगों को है कि हाउ हाउ डू मैनेज ओबेसिटी रिलेटेड इनफर्टिलिटी, सो वी हैव अ सेपरेट सेशन ऑन मैनेजमेंट. बट अगेन ओबेसिटी मैनेजमेंट जो होता है वो कोई भी इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है ओवरवेट या ओबीस वीमेन और मेन में. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू डॉक्टर नेहा. सो हम लोग काफी बार देखते हैं ना, पेशेंट्स जो आते हैं एक पैनल ऑफ टेस्ट लेके, ओबेसिटी पैनल हो कुछ भी पैनल हो, जिसमें यूरिक एसिड थोड़ा हाई है, 7-8 है. सो ओबेसिटी के साथ ये यूरिक एसिड हाई होने का क्या कोई लिंक है, और क्या ओबीस पेशेंट्स को क्या गॉल ब्लैडर स्टोन या रीनल स्टोन होने का चांस ज्यादा है? यस, थैंक यू. ओबेसिटी एक ड्राइविंग फैक्टर है यूरिक एसिड लेवल बढ़ाने का, और यूरिक एसिड लेवल अगर ज़्यादा होता है तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, उससे हम प्रोन होते हैं फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, और यूरिक एसिड इन फैक्ट अपने आप ही ओबेसिटी के लेवल ओबेसिटी को इंक्रीज करता है. सो बेसिकली बोथ द टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी इसका पता नहीं चला है. और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि थोड़ा सा यूरिक एसिड लेवल हाई हुआ है, लाइक सपोज इफ वी सी द रिपोर्ट ऑफ 6-7, then it's a tendency of the physician to start the medicine. So it is very important to discuss the symptoms कि यूरिक एसिड हाई होने की वजह से कोई सिम्टम्स है कि नहीं है.
That means asymptomatic hyperuricemia should not be treated in all patients. Though uric acid अगर हाई है सीकेडी के पेशेंट्स में 7-8 है तो उस केस में हमको ट्रीट करना है. तो बेसिकली यूरिक एसिड ट्रीट करने के पहले, उसको लो करने के पहले हमको बैकग्राउंड चेक करना होगा कि पेशेंट को कोई बैकग्राउंड डिजीज है कि भी नहीं है. और हाई यूरिक एसिड लेवल होने से डेफिनेटली रिनल स्टोन्स के रिस्क बढ़ जाते हैं. उसका अलग मैकेनिज्म है. जो ओबीस इंडिविजुअल्स रहते हैं उनमें जो यूरिन पीएच होता है वो कम होता है. यूरिन पीएच कम होने की वजह से जो यूरिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है यूरिन में वो बढ़ जाता है. इसलिए यूरिक स्टोन्स के लिए ओबीस इंडिविजुअल्स प्रोन रहते हैं. और यूरिक एसिड स्टोन एक टाइप का रिनल स्टोन है. सिमिलरली ओबीस इंडिविजुअल्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ज्यादा होता है. तो इसलिए वो लोग गॉल स्टोन्स के लिए भी प्रोन रहते हैं. गॉल स्टोन्स 3 टाइप का होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन्स और एक मिक्स स्टोन होता है. तो अगर ओबीस इंडिविजुअल्स में यूरिक एसिड लेवल ज्यादा होगा या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली दे आर मोर प्रोन फॉर गेटिंग बोथ गॉल स्टोन्स एज वेल एज रेनल स्टोन्स. थैंक यू. Thank you so much, Dr. Neha. That was very, very lucidly explained, I think. So I move on to the next question to Dr. Mridul. So how is fatty liver? आजकल तो कोई भी अल्ट्रासाउंड करेगा grade 1 fatty liver, grade 2 fatty liver लेके आएगा रिपोर्ट. So how is obesity related to fatty liver and how serious is the diagnosis of fatty liver on ultrasound, on a routine ultrasound? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली आजकल तो फैटी होने से ही लीवर में फैट मिला जाएगा ऐसे बात नहीं है. नॉन फैटी पर्सन का भी लिवर फैटी लिवर हो जाता है, कोई बात नहीं. फैटी लिवर जो है वो मतलब जो ओबेस है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में उसमें प्रिविलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है. और जो फैटी लिवर होता है वो उसका ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 6 ऐसे. तो वो है शुरुआत, मतलब लिवर में फैट एक्युमुलेशन हुआ, ट्राइग्लिसराइड एक्युमुलेशन हुआ और जब उसके इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाता है और साथ में कुछ स्टेटोसिस हो जाता है तो इसको कहते हैं नाश. नाश मतलब नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस. तो ये सारी चीज एक ब्रॉड टर्म में आता है NAFLD, दैट इज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. ठीक है. तो उसका NAFLD का कुछ स्टेजेस है. तो पहले जो नाश है, ये नाश होता है क्या, इसमें ट्राइग्लिसराइड एक्युमुलेशन हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है. बाद में जो क्या होता है लिवर में फाइब्रोसिस हो जाता है. इन्फ्लेमेशन के बाद जो इंजुरी होता है सेल का, उसके लिए बाद में फाइब्रोसिस हो जाता है. और लास्ट में क्या होता है, सिरोसिस. और उसके बाद भी एक स्टेज है अनफॉर्चुनेटली, दैट इज हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, दैट इज कैंसर हो सकता है. तो ये नाश जो है पहले वाला स्टेज, ये नाश हो जाएगा तो समझो लिवर का सर्वनाश होने का चांस बहुत बढ़ जाता है. मतलब इसमें सिरोसिस ऑफ लिवर से लेके हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा वो भी हो सकता है. तो इसके लिए पहले से ही हम लोग को जो ओबेस है उसको लिवर का जांच करना चाहिए. उसके बाद according to doctor's prescription or doctor's advice, he should undergo his food habits and other things. और अभी मैं थोड़ा प्रिविलेंस के बारे में बता रहा हूँ. जो NAFLD, जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, उसका चांस क्या है इंडिया में, कितना होता है, मतलब प्रिविलेंस क्या है. ऐसे वर्ल्ड में यूरोप में तो 26 to 30% होता है और ऑल ओवर एशियन कंट्री में 11 to 24% ऐसे होता है. चाइना जापान में आपको 30% तक हो सकता है. यूएस में 39% तक होता है. और इंडिया में एज पर द स्टडी ऑफ SP Singh et al, 24.5% पीपल आर प्रिवेलेंट टू NAFLD. और हम लोग डॉक्टर भीमोहन को जानते हैं चेन्नई के, उन्होंने एक स्टडी किया, उसमें बताया जो मेल में 32% और फीमेल में 29% को NAFLD हो सकता है. और जो डायबिटिक है उसमें चांस सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 54.5%. तो इसके लिए मतलब ओबिस पर्सन का सिर्फ डायबिटीज होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगा ऐसा नहीं, लिवर से भी उसका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं और इससे भी उनका बहुत जान का खतरा हो सकता है. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. सो जस्ट एज एक्सप्लेन, ये जो फैटी लिवर है ये एक स्पेक्ट्रम डिजीज है. शुरू में थोड़ा फैट आता है, फिर वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे लिवर सेल्स में इन्फ्लामेशन होता है जिसको नैश बोलते हैं.
उसमें से किसी किसी को जाके लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेज में सिरोसिस और बहुत फ्यू केसेस में हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो टाइमली स्क्रीनिंग और टाइमली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी आस्क डॉक्टर अरिंदम, सो हम लोग पहले भी थोड़ा विसरल ओबेसिटी, सबक्यूटेनियस ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो आजकल तो बॉडी कंपोजिशन जानने के लिए भी मशीन्स अवेलेबल है। तो when we are assessing body composition, we are basically analyzing separately fat mass, muscle mass, water content, etc. तो क्या ओबेसिटी के साथ ये मसल मास और बोन हेल्थ में भी कुछ अल्टरेशन होता है? और क्योंकि एक ऑडियंस क्वेश्चंस भी है विटामिन डी को लेकर, तो क्या ओबीस पेशेंट्स में ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का चांस या विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस क्या ओबीस पेशेंट्स में ज्यादा है? Yes, absolutely true, Dr. Sunetra. Because in obesity, the vitamin D deficiency is very common, and for that reason, obese individuals are kind of osteopenic, and there is an increased chance of osteoporosis, and osteoporotic fractures is also very high. हम लोग को पता है कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स particularly for the postmenopausal woman, that is very important, and the as after menopause most of the times, particularly in Indian scenario, the women are getting more obese. So the obesity and postmenopausal status, the both can actually increase this poor bone health. At the same time, vitamin D deficiency, particularly all Indians, I think, because of its geographical position, is vitamin D deficient. So both the conditions can actually deteriorate the bone health, and that has to be taken in mind. Now the thing is, as we are already discussing, that this it is not only the peripheral adiposity, but the visceral adiposity is also very very important. And there is a good paper from Dr. Chittaranjan Yagnik, that the YY paradox, that not only the lean individuals, even in the Indian lean individuals, they are also very much obese compared to the Caucasians who are, or the European Americans who are the peripherally obese. So it is not that okay, I am lean, I am thin, that means I don't have any complication. Today I am healthy, in future I will not do have any complication. But this thing can happen, and many a times we see that even in the obese individuals, the blood parameters are most of the times normal. The cholesterol is normal, blood sugar is normal. It doesn't mean that in future the patient will not have any complication. The patient can have some complication. Today, one of the obese individual who have a blood sugar of fasting, suppose 90, so that is a compensated report, means the blood the insulin level is high and the blood sugar level is compensated. So tomorrow the blood sugar can be in biochemically high, when the insulin compensation will be not possible to keep the blood sugar in the target level. So definitely the weight reduction is very important, and that will part of the management we'll discuss later. So the obesity and complications, the bone health, and all the things are very much related, and it is not only for the obese individuals, but at the same time, the non-obese lean individuals, those are also important. यस, थैंक यू सो मच। सो ओबेसिटी में जैसे हम लोग सुने कि ओबेसिटी सिर्फ होना ही नहीं, विसरल एडिपोसिटी जो है, विसरल टिश्यू में ज़्यादा फैट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। और साथ में ओबेसिटी, ओबीस इंडिविजुअल्स में मसल मास कम होना, यानी कि जिसको हम सार्कोपिनिया बोलते हैं, या फिर बोन हेल्थ अफेक्शन भी हो सकता है। और हाइपोविटामिनोसिस डी जो है ओबीस पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ डेटा है, कुछ पेपर्स है। और ओबेस पेशेंट्स में हाइपोविटामिनोसिस डी के वजह से भी ओबेसिटी और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। काफ़ी केसेस ऐसा भी पेपर्स है कि विटामिन डी करेक्शन से मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा कम हो जाता है। हाइपोविटामिनोसिस जिन लोगों को है, विटामिन डी कम जिन लोगों को है, उन लोगों में। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू डॉक्टर सायन कि जैसे अल्ट्रासाउंड में काफ़ी टाइम हम लोग फैटी लीवर देखते हैं, आजकल बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स में लिखा रहता है फैटी पैंक्रियास। सो इसका क्या कोई क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस है डॉक्टर सायन? Yes. Obviously in the obese patient में क्या होता है, क्या actually fat mainly stored होता है in two compartments in our body, that is already been discussed, that one is the subcutaneous adipose tissue and one is the visceral adipose tissue. Not only in the subcutaneous tissue, there are some visceral spaces where the adipose tissue can also be deposited, and the organ that is affected, that is the liver. But the other organ where also fat can be deposited, the second organ, that is the pancreas, and also an organ where the fat can be deposited,
another organ, that is the heart, epicardial layer of the heart, that can also, the fat can also be deposited in, as an epicardial pad of fat, and that can hamper the cardiac contractility. And and yeah, and again the muscle mass, that was already told by Dr. Odindam, that the muscle mass, the fat can be replaced by the myocyte, ultimately loss of muscle mass, and ultimately increase in the adipose tissue within the muscle tissue also. So the pancreas is also an important site for this fat deposition. बट पैनक्रियास में जस्ट लीवर के जैसा क्या होता है, लीवर के सेल का अंदर जो फैट जमा होता है, पैनक्रियास में सेल का अंदर जमा नहीं होता है, वो सेल का बाहर जो पैनक्रियाटिक जो पैरेन्काइमा जो कहते हैं मेडिकल टर्म के, तो पैरेन्काइमा में अंदर फैट डिपोजिशन होता है. तो पैनक्रियास तो एक्चुअली अ ग्लैंड है, तो जिसमें सेवरल एंजाइम भी निकलता है और कुछ हार्मोन भी निकलता है. तो उसका कुछ जो ग्लैंड में जो क्या कुछ रहता है, क्या लोब्यूल्स रहता है, मल्टीपल लोब्यूल्स, जिसका लाइनिंग में सेल्स रहता है एंड सेल्स से कुछ सिक्रीशन होता है. तो उसका लोब्यूल के अंदर भी फैट जमता है, लोब्यूल का बाहर भी कुछ फैट जमा हो सकता है. एंड जमा होने का कारण जो होता है मेनली सेम, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. जो इंसुलिन हम जो बॉडी का जो पैनक्रियास से जो निकलता है वो जब काम नहीं कर पाता है, जो रेजिस्टेंस बन जाता है, तो उसके कारण से क्या होता है, जो मैक्सिमम लाइपोलाइसिस हो जाता है, तो बॉडी में जो फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाता है, एंड वो एक्सेस फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड दैट इज गेटिंग डिपोजिटेड विद इन दिस सेवरल टिश्यू, एंड वो टिश्यू में जमा हो जाता है. एंड जमा होने का कारण से वो तो नॉर्मल स्पेस नहीं है वो जमा होने का, इसीलिए क्या होता है, उसका जस्ट लाइक अ फॉरेन बॉडी रेस्पॉन्स हो जाता है, उससे थोड़ा इन्फ्लामेशन बन जाता है एंड उसका कोई टिश्यू को डैमेज करता है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसमें जो फैट जमा होता है पैनक्रियास में, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा पैनक्रियाटाइटिस लाइक सिम्टम्स भी आ सकता है, और इफ द पेशेंट इज सफर्ड फ्रॉम पैनक्रियाटाइटिस, उसका सीवियरिटी भी बढ़ जा सकता है ड्यू टू द फैटी डिपोजिशन इन द पैनक्रियास. And in the long run, just like the liver, the pancreatic carcinoma और कैंसर होने का चांस भी बढ़ा देता है. जो पैनक्रियाटिक the इंट्रापैनक्रियाटिक फैट जो जमा होता है, उसके कारण से पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा जो कहता है, जो कैंसर होने का चांस भी बढ़ा देता है वो पैनक्रियास को फैट. So it is obviously important to screen for the both liver fat and also in the pancreatic fat. But if you ask for the how to reduce this, the one and only solution is to reduce the body weight. If you can reduce the body weight properly, we can reduce the liver fat content also and the pancreatic fat content also. But if there is irreversible changes once, then there is nothing to do. So always screen from the early stage and always follow the proper lifestyle so that we can reduce this the visceral fat. Thank you. Thank you, Dr. Shayan. So, Dr. Neha, I am always asking you very offbeat questions. So now, can I ask you whether obesity affects our lungs or and our kidneys? And we also have another offbeat question from the audience, which is a very interesting one. So, can obesity can it be related to an increased risk for autoimmune diseases? Yes, so I'll answer one by one. It's very interesting to answer these questions. As discussed by Dr. Shayan in previous first or second question, that obesity की वजह से lungs में problems आती हैं, and he has already touched upon the area of obstructive sleep apnea. So basically, because of the obesity, there is a problem in the mechanical functioning of the lung. What does it happen? There is decrease in the functioning capacity of the lung. There is increase in the respiratory rate. The tidal volume, the volume of the lung gets decreases. So so obese individuals are more prone for developing asthma, COPD, obstructive sleep apnea. Then there is airway hyperresponsive also. Obesity leads to low-grade inflammation, which can exacerbate the symptoms of asthma and COPD. So this is how it affects the lung. Now coming to kidney, there is both direct and indirect relation mechanisms for obesity and kidney diseases. Directly, what happens when in an obese individual, there is a something term called as obesity-related glomerulopathy. What happens in obese individuals, the normal kidney has to function more to maintain the supply for the higher BMI. So that means our kidney is working harder. So in long run, what happens? It leads to hyperfiltration, and this hyperfiltration will keep on damaging the glomeruli in the long run. The indirect cause is obesity individuals. We have discussed that they are more, they have got insulin resistance. So they develop
type 2 diabetes. And this type 2 diabetes, we all know that it's a risk factor for CKD, for renal diseases, as well as for other cardiovascular disease, hypertension, which we have already discussed. Now, obesity related to autoimmune diseases. Yes, female obese individuals, because of obesity, there is low grade inflammation, there is increase in the secretion of adipocytokines, because of which they are more prone to autoimmune diseases. But the important factor for autoimmunity is genetic and the environment factor. Among the environmental factor, one of the factor is the obesity. So definitely all the obese individuals are prone for like having diseases in all the organs: cardiovascular, liver, kidney, GI, lungs. We have already discussed this, and for autoimmune diseases also. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, वेरी लूसिडली एक्सप्लेन। सो ओबेसिटी, जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे, इनका मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस और मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस दोनों के वजह से लंग्स को और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है, और ऑटो इम्यून डिजीज का रिस्क भी कुछ हद तक ज्यादा है। Now, this is also one of the audience questions. So, may I ask Dr. Mridul, sir, that we know childhood obesity is now a very raging pandemic. So, just a few lines, just a few words about what are the special concerns about childhood obesity. Nice question. Childhood obesity, this is a very serious health issue. This is worldwide. The main cause of childhood obesity is the behavior of children which they adopt from his or her parents and caregivers. पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जस्ट फ्यू सेक्स। मेरा एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, माय फ्रेंड, उसने बताया जो ऐसे कुछ महिलाएं हैं जो बच्चे के लोग आते हैं क्लिनिक में, चैम्बर में, प्राइवेट चैम्बर में, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चा देखने में इतना हट्टा कट्टा। तो डॉक्टर ने बोला नहीं खाते हैं तो हवा से तो ये वजन नहीं बढ़ते, तो हवा से नहीं बढ़ते तो कहाँ से होते हैं ये वजन, इतना वजन है, आप बोल रहे कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से माँ है जो ऐसे मतलब बच्चे लोग को छोटा से मतलब जब चाइल्डहुड है उससे उसी टाइम से ही ज्यादा खिलाना चाहते हैं। That day, I took my son to his exam center, CBSC, class 10 exam center. I saw in a car a mother was feeding her daughter something before getting down from car. तो ऐसे होता है, मतलब कुछ पेरेंट्स तो बच्चे को जैसे पालन करेगा वैसे ही बच्चे बढ़ते जाएगा, वैसे ही बढ़ेगा। बच्चे को अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखाया जाता है तो हेल्दी खाएगा, अगर फिजिकली एक्टिव होने के लिए स्टिमुलेट करते हैं तो फिजिकली एक्टिव होगा। लेकिन वो नहीं करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं बैठे बैठे जो ये देखते हैं कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, कार्टून देखते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन खेल को बहुत कम करते हैं आजकल, इसीलिए बच्चे लोग का ओबेसिटी ज्यादा हो रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज अदर फैक्टर्स लाइक genetic predisposition and others. And I like to say one thing, ये जो बच्चा का ओबेस होना है, फैटी होना, इसका कारण जब वो वूम्ब में होता है तब से ही स्टार्ट होता है। डॉक्टर अरिंदम ने, डॉक्टर चित्तरंजन याग्निक ने एक बात बोला है, आई वाज फॉर्चुनेट टू हियर हिज वन लेक्चर इन वन कॉन्फ्रेंस एंड ही एक्सप्लेन वेरी नाइसली दैट ओबेसिटी का सूत्र ओम से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे मतलब मदर का जब प्रेग्नेंट होते हैं, मदर का खाने पीने का तरीका बच्चे का ऊपर असर होता है। तो ऐसे बात के बाद बच्चे का अगर सही तरीके से पालन पोषण नहीं करेगा तो वो बच्चा ओबेस होते जाएगा। तो ये ओबेसिटी दैट इज वेरी डेंजरस। और एक बात है, उसका जो मेजरमेंट करते हैं वो सिर्फ बीएमआई से नहीं होता है, उसका एडल्ट लोग का बीएमआई से बोलते हैं जो ओबेस है, नॉन ओबेस है, ओवरवेट है ऐसे। लेकिन बच्चे लोग का बीएमआई तो निकलना पड़ता है, लेकिन वो बीएमआई को एक परसेंटाइल चार्ट में बिठाना चाहिए, उससे पता चलता है जो वो ओबेस है या नहीं। 95 या एबव होने से वो ओबेस होता है, 98 से कम होने से वो ओबेस नहीं है, ऐसे बताया जाता है। और बच्चे का ओबेसिटी अगर बोले तो कॉम्प्लिकेशन जो होता है, ये कॉम्प्लिकेशन जब एडल्टहुड आता है तब भी उसका ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा अगर बच्चा ओबेस हो तो, जैसे कि एस्थमा, then sleep apnea, then type 2 diabetes, high blood pressure, high cholesterol,
देन हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ऐसा वगैरह, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। और साथ में क्या होता है, एक सोशल आइसोलेशन हो जाता है, एक मतलब लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है बच्चे में, जो बहुत मोटा है। खेलने कूदने के लिए फील्ड में गया तो बोलेगा जो वो मोटा आया तो वो अलग सा बैठेगा, घर में आकर अकेला अकेला बैठेगा, मतलब एक डिप्रेशन आ जाता है, इसलिए एक सोशल आइसोलेशन भी आ जाता है। और लास्ट में ये भी कुछ दिन हुआ, ये भी मिला है, जो बच्चे ओबिस है, बाद में उसका वीटी मतलब वास्कुलर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे खतरनाक सब डिजीज हो सकता है अगर बच्चे ओबेस हो तो इसके लिए बच्चे को भरण पोषण में बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, जो वो हेल्दी खाए, खेलकूद करे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो ऐसे। थैंक यू। बिल्कुल। Can I just तो add one thing, Dr. Sunetra? Just one thing. मिदुल दास सर एकदम सही बोला है पूरा. Just one thing that हम लोग अभी ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम करते हैं. So that is another point of getting obesity. So हम लोग बहुत busy है. Particularly all the working women are there, so they are very busy. So breastfeeding is being neglected, and most are getting the canned foods from the just Yes. after the birth. So that is a very important cause of pediatric obesity in most of the times. So that is. Yes, yes. very much. So previously there was a saying that obesity does not run in families. It's just that the families do not run. But no, it's of course sedentary lifestyle is one of the factors, but there is a lot of genetics, a lot of epigenetics. It starts in utero, as explained, and there are so many factors which cause pediatric obesity. And of course, we have to target early to prevent long-term complications. So my next question will be to Dr. Arindam. So जैसे हम लोग ने पहले भी आप बोल रहे थे कि there is something known as metabolically healthy obesity and also there is something known as metabolically obese normal weight. तो कितना हद तक ओबीस इंसान का अगर ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो वो कितना हद तक हेल्दी है एक्चुअली में? Yeah, I have just elaborated the thing that आज भी आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, आप ओबेस है, बट आपका सब रिपोर्ट नॉर्मल है. बहुत पेशेंट आते हैं हम लोग के पास, सर मैं तो बहुत मोटापा हूँ, तो मेरे को एक फिजिशियन डरा दिया था कि आपका शुगर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, बट आई डिड ऑल द पैनल रिपोर्ट्स फ्रॉम सम लैब एंड अभी देखिए सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो मैं कल से सब खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. But the thing is that you have to cautious. Okay, so this is a compensated thing. Now what the reports are actually showing. So tomorrow we can have some problem in you. कल आपको ब्लड प्रेशर आ जा सकता है, कल आपको हार्ट डिजीज आ जा सकता है, कल आपको डायबिटीज आ जा सकता है, बट टुडे इट्स नॉट देयर, नॉट रिफ्लेक्टेड इन द ब्लड रिपोर्ट्स, बट टुमारो इट कैन हैपन. सो today's healthy obese individual are not a problem for tomorrow. It's not like that. So anything can happen at tomorrow. So some reports are there, कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि obesity से problem नहीं होता है, but in general in majority I think we have to be cautious enough, and for tomorrow's protection it is not only so आजकल हम लोग क्या है, आजकल हम लोग डायबिटीज से डायबिटीज इंपॉर्टेंस डेफिनेटली देता है, बट हम लोग प्री डायबिटीज में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज नहीं आना है. ऐसे ही ओबेसिटी है, मतलब कल आपको बीमार नहीं होना है. So that is the most important thing, and that's why the lifestyle modification, diet, exercise, stress reduction, alcohol, and the addiction, the reduction. So these are very, very important, and that the message has to be done to all the people that today's normal report, today's healthy structure is not for tomorrow. Tomorrow you can be disease. So there is also an audience question. So because this is related, I'll ask you this. So what is obesity related? How does obesity cause dyslipidemia? What are the cholesterol changes that we commonly observe in obese people? Yeah, this has already been discussed in our discussion that the triglyceride and the HDL is the most important thing in obesity. So triglyceride level goes high, and mostly I think the triglyceride is related to the food intake, but the LDL cholesterol and HDL cholesterol is related to body's internal lipid reflection. So yeah, the low HDL, that is a very important risk factor, particularly for cardiovascular disease, particularly cerebrovascular disease. Low HDL level gives a high chance of cerebrovascular accident. At the same time, triglyceride level, so that's also very important for the fatty liver. These are the two important things. So high triglyceride and low HDL is a major, the reflection of the obesity.
Yeah, so these are also the parts of metabolic syndrome, and this is the common change that we see in obese. So, may I ask Dr. Neha? We had a session on South Asians and its obesity, obesity in South Asians, how that is different. So, South Asians में जो है, how is it different from our Caucasian friends? So, do we have heart diseases earlier, और क्या हम लोगों को lesser BMI में, normal body weight में भी heart disease होने का chance ज़्यादा है, whites के Caucasians के comparison में? Yes, actually, this part has already been touched upon on the YY paradox. Uh, Basically, we have got a typical phenotype which is called as thin fat phenotype, which means that we look thin from outside, but we have got lot of fat inside. We have got lot of fat deposited in our visceral organs, and this typical phenotype is also called as Asian phenotype. So, and it has been seen in the several studies that this Asian phenotype is more prone for developing the cardiovascular diseases at a very early age compared to the white population. So, despite having normal BMI or the lower BMI, because of the increased visceral fat, we develop this cardiometabolic diseases very early. In fact, we Indians develop diabetes, type 2 diabetes at a very early age. We find many patients at the age of 15, 20 years having type 2 diabetes at the because of the increased risk and because of this viral paradox. And there is also concept of a thrifty genotype. Basically, we have inherited genes from our ancestors survive, which helps us to prone helps us in surviving the famine situations. But it's like good to, or in fact it could be the contrary situation also, that we have not seen any famine situation so far. So what happens to this? I think there is some issue with Dr. Neha's network. So, can we move on to our last question for Dr. Sain? So, apart from having PCOS, we know that obese females, they also have a higher risk of miscarriage. So, obesity during pregnancy and gestational weight gain is a very important factor to look into. So, what should be the correct gestational weight gain? So, we who are non-obese, pregnancy के दौरान कितना weight gain करना चाहिए females को? Okay, there is a two question. First thing is that is effect of obesity on the female fertility issue. So obviously the हम लोग का ओजन जब बढ़ता है, mainly especially the female, the chances of the menstrual problem and the chances of the infertility is increasing, and that is mainly occurs from the polycystic ovarian syndrome type of the diseases, that is the where there is a multiple cyst formations in the ovary along with hyperandrogenemia, etc., that has already been discussed. But in few cases it has also been seen that even without any polycystic morphology, and also the patient is with obesity cannot conceive, or there is a chances of the infertility is there, and even she conceives, there is a miscarriage. It is mainly in the second trimester, or it can also be in the first trimester. There is a miscarriage, and there is a multiple pregnancy complications like the increasing rate of the hypertension in pregnancy, increasing rates of the diabetes, that is the gestational diabetes in the pregnancy. So there are the number of complications in the obesity with a female reproductive function that can occur. But the major reason is behind that, just a reverse thing. The obesity can just reverse the scenario. In the male body, the male hormone level can be reduced, female hormone level is increased. But in the female body, just the reverse thing. The male hormone level can be increased. That is called the hyperandrogenemia. And that is the main concern in the female, the fertility issue with obesity. एंड एट द फेज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब इंसुलिन लेवल जब बढ़ जाता है, वो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हर जगह में रेजिस्टेंट होता नहीं है, कुछ कुछ जगह में वो सेंसिटिव रह जाता है. एंड वन ऑफ दिस ऑर्गन दैट इज द ओवरी, when the ovarian cells are become is remain sensitive to the insulin. So if the insulin level is raised because of the surrounding insulin resistance in the other organ, but the ovary is still sensitive to the insulin, and this ovarian cell can synthesize more and more androgen, that is the male type of the hormone, with the at the phase of high insulin level in our body. So the basic thing, there is a increase in the androgen level in the female body, and for that reason there is also different types of the problems in the menstruality
and also there is a problem in the infertility, and many of cases the anovulation can occur because the follicular maturation can be disrupted due to the these are phase of this hyperandrogenemia and because of the insulin resistance. So this due to the anovulation, the infertility occur. Even the patient is having the normal menstrual cycle, but patient cannot conceive because of this anovulatory bleeding of the patient. So there is a problem in the ovulation, but the normal menstrual cycle remains continuous. So patient cannot conceive. So that is the main concern. And second thing is the miscarriage. The chances of the miscarriage is also getting increased at the phase of obesity. There may be a defect in the embryo and its implantation also if there is a obesity. So there is a problem in the implantation and even in the embryo maturation. So especially the second trimester miscarriage rates is seen higher at the phase of the obesity. And so the pregnancy related complication like the hypertension in the pregnancy and eclampsia, preeclampsia, and the gestational diabetes, the risks are also getting increased in a female patient with obesity and pregnancy. Now the second question is, what is the correct weight gain? So in a normal person, the average weight gain is around is near 14 to 15 kg. That is ranging from 11 to 16 kg in a normal weight person. But is it equal for all person? No, it is not equal, because in the obese patient, the target for the weight gain during pregnancy is to some extent less. And in the lean patient, it is a target weight gain is to some extent on the higher side. So when we discuss about the obesity, the target weight gain is to some extent lesser, and that is around 9 to 10 kg. If it is the overweight person, then the target weight gain is around 11 to 12 kg, not more than that. But if it is a concern for the lean person, the 18 to 19, the 17 to 19 kg weight gain is required for a lean person. So this target weight gain during pregnancy varies on the basis of the previous body weight. In a normal person, average is around 14, ranging from 11 to 16 kg. Okay. Thank you so much. So we had a very exciting session today, and we have addressed almost all the audience questions except one. So anybody of you, so why COVID infection causes more severe complications in obese patients than non-obese? I guess the answer is again in insulin resistance and inflammation, the same things that we have discussed. So before we close the session today, may I have at least one line from each of our eminent panelists to for our audience? Just one line about obesity and its complications. Dr. Arindam, please. या ओबेसिटी बहुत खतरनाक चीज है. ओबेसिटी वी कैन कॉल इट एज अ बीमारी है. तो आज तुम्हारा सब रिपोर्ट नॉर्मल है, मतलब कल नहीं हो सकता है, आज कुछ प्रॉब्लम हो भी सकता है. So all the body parts can be involved. So try to get reduce obesity by your proper lifestyle modification. So that's my final message. Thank you. Dr. Mridul Das. Please unmute Sir, yourself, please sir. Am I audible? Yes. Am I audible? Okay. Yes, yes. My final message is, longer the belly line, shorter is lifeline. So सबको अपना ओबेसिटी का ख्याल रखना चाहिए, वजन कम करना चाहिए, खाना हेल्दी खाना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए. That's all. Excellent, sir. Dr. Shayan. Yes, and mainly in the current scenario and the current lifestyle habit, we all should be concerned about the weight gain and what are the amount of the calorie we are gaining and what are the amount of the calorie we are lost during the exercise. So always be cautious when you take 1 kilocalorie, and also try to expand it this 1 kilocalorie by running or by the physical exertion, so that the balance is maintained. And always screen for a regular day-to-day for the obesity and the diseases like the diabetes. Always take the blood pressure, check the cholesterol level, so that we can pick it up at the early stage, and we can take appropriate measure to prevent the further complications of this metabolic syndrome. Yes, yes. And Dr. Neha, a very crisp one-liner from you. I would like to say that genetics loads the gun, but lifestyle
pulls the trigger. And Yes. obesity is a preventable and treatable disease. It should be treated as a disease. And if someone is obese, then they should consult their physician or the endocrinologist as early as possible and screen themselves. In fact, 30% metabolically healthy individuals are found to be become metabolically unhealthy in the long run after 5 years. So it's very high time to prevent yourself from becoming obese. Thank you. I thank all our panelists and also the audience who have joined us and asked us very interesting questions. So, obesity affects almost all the organs of the body, and if we are targeting obesity, we are giving an overall protection to ourselves. Thank you so much, Endocrine Society of India. We close the session for today. Thank Thank you you, all. everybody. Thank you, Thank Thank guys. you. you. Bye Thank bye, you. all. Yeah, bye.